प्रोग्राम की इब्तिदा करें. Dr. Ismail, you can continue, please. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes, though it is an online teaching. My dear brothers and sisters, I don't know if there are sisters. The first thing that I want to take a caveat is that I'm not a speaker of Urdu. So I'll be talking most of the time in English. And we have plenty of excellent Urdu speakers over here. So they will translate as and when it is necessary. And this training program is about the art and science of teaching, not online teaching, though the caption is like that. And I have seen that some of you are sitting in a room with a computer screen, or some of you are sitting with mobile, and some of you are listening to me while traveling. However, we are blessed. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Why we are blessed? We are blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, because in spite of these COVID lockdown and other limitations, we communicate each other in loving and caring terms. And various schools in North India are going to be connected through this training program. Every machine requires a workshopping. Every machine needs a little oiling and a little, repair work as the time passes. In the same way, teachers also need to have sort of looking at themselves. And inshallah, this sort of training workshops or training sessions will give some time to look into ourselves as teachers. And of course, the situation is quite different because there are no schools now. Students are at their homes and teachers are at their homes. But the situation is changing. And in Kerala, now the schools are being opened and students are, divided into small groups, and teachers are teaching them on site or in their regular classrooms, though not as before. Mr. Aliuddin, please just give them the summary of what I said. Dr. Ismail, it's good that I give them the summary what you have told, but it will be time consuming. I think that we'll complete the session and we'll give one shot translation in another one. This will be better. That would be fine. Okay. In any program, in any teaching, the first thing is that the teacher or the trainer should introduce himself to the audience. In my case, I'm an assistant professor in TLSU, Faculty of Engineering, currently at English Language Institute, King Abdulaziz University. I'm a Cambridge certified teacher trainer, life coach, NLP practitioner, hypnotherapist, and a columnist and a motivational speaker and a success. This is my credential, but I don't know how far I'll be able to cater to your needs, since most of you are Urdu speaking teachers. But still, inshallah, since we are all human beings, we'll understand each other. And to start with, I told you as a teacher, we have to first of all build up rapport. Rapport means personal familiarity.
So that is why I introduced myself, and most of you have introduced yourself from different schools. I have been just listening to all of you. But let me see. Here, speak loudly is a request. I mean, speak loudly, speak visually. In online teaching or in this online platform, when I ask you questions, you have to type in your answers. But I find that, most of you don't have mobile phones in your hands. Some of you have mobile phones. So you please type down your answers when I show you something. Okay. So this is it. I'm going to give you a small game, just to start with. You have 2 minutes to write down all the differences that you see. I'm going to show you 2 pictures. And I want you to just, write down the differences in the pictures. Why I use these sort of activities? Because you are mostly teaching elementary school students. These things you can make use of in your classroom as well. To start a class, you can take 2 pictures and ask them to say, what is what? What are the differences between these? And if you get all the differences, 1 bonus point. This is something which we can play with the students. And the picture is this. Just have a look at this picture. 2 pictures are there. And what differences you find in these 2 pictures? You can speak up, or you can write it down in the chat box. Can you please find the differences between the pictures? اختلاف بين الصورتين. Am I right in English? Asadullah Safavi, what are the differences in these 2 pictures? Can you please tell me? أول صورة فيها تتغير. Yeah, what are the difference? Yeah. بلون أحمر. في صورة ثانية بلون أحمر. Ahmad, balloon, then the alban, lawn of the balloon. Good. Then. موجود في صورة ثانية. وكمان الشجرة دي شجرة فيها صور تختلف عن الصور الأولى. ما شاء الله. Very good, very good. وصورة ثانية فيها صورة سحاب وصورة أولى ليس فيها صورة سحاب. Wonderful. Okay, then. Amazing, yeah, Ustad. Any other differences? ثانية برضو في الباب هذا أزرق وهذا أحمر. Yeah. تختلف. Yes. تختلف الصور. Okay, good. Can you ask your team members to just point out some differences they are also looking at? Are they seeing? Are they watching? Can they see this picture now, Ustad? आप सबसे गुजारिश है ये 2 तस्वीरों में क्या फर्क है बताएं आप लोग. Yeah, the other team members, do they see? Mr. Ali, my concern is, can everybody? Yes, everyone can see. क्या आप लोग सब ये पिक्चर देख सकते हैं? जी. ठीक है, माशाल्लाह. आप लोग की इंटरेक्शन अभी शुरू हो रही है और इंशाल्लाह 1 घंटे तक चलेगी ये इंटरेक्शन. आपकी हमारी बातचीत. ऐसा ना हो कि सिर्फ डॉक्टर इस्माइल बोलेंगे, आपकी बोरियत और आपके हमारे साथ देने के लिए आप भी जो है ना बोलेंगे, हम भी बोलेंगे. तो दूसरे भाई लोग, अगर आप लोग प्लीज इस तस्वीर का डिफरेंस डॉक्टर इस्माइल सुनना चाह रहे हैं आपसे. You can type it. Okay, cloud. Afzal Hussain has written the cloud is different. Okay, there is cloud in the second picture, picture B, and no cloud. Cloud के बारे में क्या बोला? أنا أكلم مرة ثانية. Okay. You can proceed. Every other teacher can also proceed. There are nearly 15. There are nearly a number of differences are there. You have told me some of the differences. Very good. Now I don't have time. No problem. This activity you can use in your classroom. What for? Yes. This activity you can use in your classroom because children, they are very much interested in colors.
They are very much interested in, solving puzzles. And, instead of going and talking to them, you can choose pictures just to make them interested. You understand? जैसे Show them, बताते हैं कि भाई एक and तस्वीर जो what है ना you 1000 see अल्फाज here. बोलती है यानी Instead उन of, तस्वीरों से आप पढ़ाएंगे straight away starting, you can ask them, what is this? What color? Okay, this is color. What is this? How many persons are here? Okay, these are the things you have to do in your classrooms. Very basic thing, very fundamental things. So instead of teaching them merely with your voice, you choose and you use pictures, very relevant pictures, even if you are teaching Arabic, Urdu, science, maths, or everything. So children will be very interested to listen to you. So there are 3 types of students in our class. Okay, there are how many types of? 3 types of students. Some of them are interested in listening. Their ears are big. Some of them are interested in watching. Their eyes are big. Some of them are interested in doing. Their hands are big. So there are 3 types of students in our classroom, and every class must allow the students to learn through their eyes and learn through their ears and learn through by doing. अब You आप understand, my बताइए dear? सर कितने टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं ये पूछना चाह रहे डॉक्टर साहब There are 3 types of students. One is visual learners, the other is auditory learners, and the other is kinesthetic learners. And a teacher's communication, interaction in the class will be very effective if the teacher uses all these 3 tools to make them interested. Aliuddin Saab, I understand that some of them don't understand what I say. इन्हें डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में आप मेरी आवाज आ रही है आप तक जी जी आ रहे हैं। जी जी एक स्टूडेंट है वो जो सुनते हैं बहुत ज्यादा एक स्टूडेंट वो है जो बोलना पसंद करते हैं No, एक watching. स्टूडेंट वो जो नजरों से समझते हैं लेकिन कम बोलते हैं एक स्टूडेंट बोलते बहुत ज्यादा है और एक स्टूडेंट समझते बहुत ज्यादा है Doing. तो आपको स्टूडेंट्स की एबिलिटी के हिसाब से उनकी जो ताकत है समझने की किसी के पास ताकत होती है किसी के पास सोचने की किसी के पास बोलने की तो उस बेस पे आपको उनको इंटरेक्ट करना है पढ़ाना है क्योंकि जितने क्लास में स्टूडेंट्स है सबके सब जो है ना एक ही मिजाज के नहीं होते यानी अब समझ गए Okay, thank you. So you remember these 3 words. Visual, please take down. Visual means visual, eyes. देख के समझने वाले स्टूडेंट्स होते हैं Auditory means ears. जो And सुन के समझने वाले kinesthetic means students with doing. I mean, interested in doing more than listening or watching. And if as a teacher you give them activities which gives them chance to watch, chance to listen, chance to do, then your classroom interaction can be termed as effective. Okay, so in every classroom, please use these 3 modes of interaction with your students. That's why, though you are very big adult learners, you are very good, excellent teachers, you have been teaching for more than 40 years, maybe 20 years, 30, 15 years or 10 years or 5 years. You have been teaching and you know all these tricks and tips. Even with your experience, I just use this picture to create interest in you because there is a child in us. There is a child in us. There is a baby in us. And at any age, if we are given such a chance, we feel challenged. Oh, I should see. Oh, there are clouds. You can see what are the differences here.
Okay, these are the differences. The sun is not smiling. In the picture, sun is sad. There is no smoke. Okay. There is only one kite. Only one kite. You see? Here only one kite. Here it is two kites. And there are no curtains for the windows. It's cloudy day. Here it is cloudy. The grass is shorter. Here it is longer. There are flowers on the trees. We can use these pictures to teach them numbers, to teach them very basic language, and for every kind of activities. You can start a science class with this. You can start a wal fajr wal layalin ashr. Okay, you can start washamsu wal wal qamari idha talaha. Even for teaching Quran, you can use these sort of small pictures. And if you start talking to them through pictures, students will be more interested than teaching them washamsi waluhaha. You understand what I mean? Because kids are interested to watch pictures, listen to stories, and to do things. And if you start walluha wallayli idha saja, and if you start giving them the ma'na, the meaning, you can ask them to draw the picture of a sun and ask them to write down what is a sun, what is a moon, what is special about sun, what is special about moon, what is the time. Ask them to draw the time clock and ask them what is luha time. Instead of talking to them, if you give them pictures, they will understand it more, they will learn it deeply. Hope you understand what I mean. And now समझ चुके ये सब जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? Yeah. समझ रहे हैं? जी 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 दूसरे भाई लोग सबके लिए क्लियर है? ये पिक्चर का जो डिफरेंस दिखा है, ये पिक्चर में और दूसरी पिक्चर में फर्क क्या है बताना चाह रहे थे. और स्टूडेंट्स को जो है ना इंटरेस्ट लाने के लिए हर स्टूडेंट मुख्तलिफ होता है. उस बच्चों के हिसाब से जिस बच्चे को जैसे समझाना है, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स देख के समझते हैं. एक पिक्चर 1000 अल्फाज बोलती है ने, तो पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को इंटरेक्शन करते हुए उनके मूड पे, उनके सलाहियत पे लेके जाते हुए समझाना, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिले. ये बोलना चाह रहे थे. Okay. I'll be talking very less because I want to know how you respond. Then inshallah in future we can arrange such classes. Askar Ali is there. Brother Askar is there. Brother Mushtaq was there. It's very easy. Communicate interesting things to you in Urdu, but I just started as a workshop. Okay. And I'm setting an example of how to do things. That's all, because we have limited time and I just want you to have a thought about it. And my question is, who is an illiterate? Who is an illiterate means, who is ummi? Ummi. Ummi means somebody, what is the answer, Ustad? Who cannot read, who cannot read, write. Who cannot write. These are ummi. Yeah. Okay? Who cannot read, who cannot understand. But in the modern times, an ummi is this. Please give the translation, Mr. Aliuddin. The illiterate of the 21st, I cannot see the continuation after 21st, doctor. Yeah, 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. हाँ, इस हम लोग जिस वक्त में है, यहाँ पे वो लोग पढ़े लिखे नहीं है जो पढ़ सकते या लिख सकते नहीं. वो लोग है जो समझते नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाह रहे, फिर पढ़ के फिर दोबारा उसको दोबारा रीलर्न नहीं करना चाह रहे. क्योंकि हमारी जो उम्र है, अब एक बार हम लोग का एजुकेशन खत्म हो गया, ग्रेजुएशन हम लोग कर लिए, मास्टर्स कर लिए, उसके बाद हम लोग अपनी मसरूफियात में आ गए जिंदगी के. फैमिली हो गई, शादी हो गई, नौकरी हो गई, लेकिन हम लोग फिर पढ़ना नहीं पसंद करेंगे, फिर सीखना नहीं पसंद करेंगे, सिखाना नहीं पसंद करेंगे. वो लोग कामयाब है जो सीखते हैं, सिखाते हैं बार बार डेली बेसिस पे.
we have to change because the situation is different. The students are different and they have different exposures because they are playing with the mobile. They are, using Google Map. They are, using ATM teller machine. I mean, automatic teller machine. Maybe they are using a different study materials. So in the teaching scenario, in the schools and in the madrasas and maktabas, the teacher must change because students are in a different world. The teacher must change. And if the teacher is not willing to change, that teacher or that person is ummi. You understand? Ummi doesn't mean Yes, that yes. you cannot read or write. Now, 21st century ummi means somebody who is not updating his knowledge. यानी यहाँ पे टीचर को अपडेट होना है सबसे ज्यादा. एक टीचर आप सलफी साहब है, आप जी, आपके क्लास स्कूल में 50 बच्चे हैं. अगर आप हर रोज अपडेटेड रहेंगे कोई भी चीज से, तो आपसे ये 50 बच्चों का फायदा होगा. तो सबसे ज्यादा अपडेट होना किसको है? हमको होना है, टीचर्स को होना है, प्रिंसिपल्स को होना है, जो गाइड है, स्कूल के डायरेक्टर है, उनको होना है, क्योंकि कमान उनके हाथ में है. वो जैसे गाइड करेंगे वैसे टीचर्स फॉलो करेंगे, टीचर्स जैसे गाइड करेंगे स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे. तो सबसे ज्यादा अपडेटेड हमको होना है, टीचर्स को और प्रिंसिपल को है. Okay. I want to say something. How long can we continue this class session? Because you have job, right, Mr. Aliuddin? No, I'm on a holiday today. Okay, then I can up to what time I can take, because we have already exhausted some of the time waiting for It's up to them. आप लोग और कितनी देर बैठना पसंद करेंगे? आप लोग बताइए, आपके इंटरेस्ट पे है. क्योंकि ये पहला सेशन था. आप कितने टाइम देंगे, हम लोग तैयार हैं. Okay, alhamdulillah, माफी मुश्किल है. Inshallah, we'll be doing हमारे some more पास भी things. बहुत टाइम है माशाल्लाह. Yeah, because this is a beginning. This is a starting, and we will continue in later sessions also, because inshallah. Okay, now I'll go to the next session. I mean, next Doctor, slide. Doctor, can you one second, clarify doctor. how long you will be doing this? For how long you will be continuing this school? I can continue as and when they like to, because I'm on a holiday and I'm free. But at the same time, I want to see how long are they going to sit. Then I can easily cut and resize. I can easily flexibly manage. So my question is that, can I continue for another 1 hour or half an hour? What do they need? That's Minimum half hour. another 1 hour. Okay, inshallah. MashaAllah. It means they are understanding you, doctor. Alhamdulillah, that's cool. That's cool. Jazakallah khair. Okay, so ummi doesn't mean somebody who cannot read or write. Ummi means somebody who is not updating, renewing their knowledge. Okay, now this is the situation now. What is the situation? Coronavirus. Coronavirus is there. The world has undergone a drastic change. And a new normal is going to come. New normal means we'll be in normal mood, but it will be changed after the vaccination and everything. There will be a new normal, because now we are putting on mask, kamam, in Arabic you call it kamam. And teachers are speaking through the mask. Students are sitting at their homes. This is the situation. And every change becomes a social change agent. This is a model every teacher should draw down and understand. Aliuddin, please explain to them, if a new change happens, these are the sequence through which they pass. Inshallah, even in teacher training programs, because All India Islahi Center is arranging a teacher training program. Then also these process will be there. They'll be shocked. Oh, some teachers from internationals are teaching. We are to sit in a training session. Oh Allah, shock. But later on, no, we are not going to sit. You might have experienced it when you were talking about the teacher training program to the teachers.
You might have experienced, no training. We have no students. We have no classroom. Why training? Then recognition that things are different. Then they say, things are different. People are there listening to you. People are there eager to know how the schools are running, how the students are learning, what are they doing in their lockdown period, how the classrooms are going on, how many of them are learning mathematics, how many of them are learning language, how many of them are learning Arabic, how many of them are learning Quran, and how long do they take to read? Then, sitting in a classroom, in a workshop, I am to present. Do you want me to give a training of how you teach, or a demonstration on how I teach? Mushkila ya habibi, mushkila. I cannot do that. I cannot do that. If the principal asks the teacher, please arrange a demonstration class, then they will say, oh, I cannot do it, teacher. But that depression will be there. Again, what will happen? They will start. Okay, I can do it. One of you will arrange. Okay, I can teach how I teach Urdu, how I teach mathematics. Asghar Sahab has wonderful YouTube videos on teaching different higher concepts in mathematics. So in the beginning, teachers will be a bit reluctant for such training program. I know some of the teachers have been taken to Mumbai. There are excellent schools, mashallah, and they have attended such wonderful seminars and workshops in Mumbai, right, Ariuddin? Yeah. Yeah, so some teachers are very familiar with the new training program, but some of them are not. And they start engaging. Then they make a decision. Inshallah, I am going to do a better teaching in my class, a better understanding of my students. I'm going to do some experiments. Inshallah, I'm going to change. And again, the integration. The same is true when we are talking about online teaching during COVID time. We don't have mobile phone. We don't have internet connection. How can we teach them? How can we engage them? Teachers are upset. Teachers are shocked. There was denial. But later on, most of the schools in the world, they are now using online teaching learning platform if they don't have any digital divide. I mean, the students have mobiles. If your students have mobile, if your students have tablets, at least those students must be taught through online. I hope that you are teaching them and engaging them. I wanted to have a discussion on that, but this is for an introduction. Just to see that, we pass through these stages, but at the last stage, we are going to be bold and we are going to get integrated with the change. Aliuddin, please explain to them because they will be happy to know these things. Yeah, So it's this is a very okay. important model by. Doctor, we will share the presentation once the meeting is, our training is finished. They will understand slowly the slide. The slides are not so difficult to understand even. Yeah, please. And Alhamdulillah, things by their facial expressions, by their interaction, we can feel that they are going through not 100%, at least they are understanding to their best level. भाई लोग, आप लोग को समझने में कोई तकलीफ है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आपको हम लोग शेयर करेंगे व्हाट्सएप से या ईमेल से, ताकि आप लोग को समझ में आना है. ये इंग्लिश जो यहाँ पे लिखी हुई है आपको सब समझ में आ रही है ना? जी और माशाल्लाह लैंग्वेज बहुत अच्छी है और समझ में आ रही है, और 100% नहीं तो कम से कम 70% हम लोग समझ रहे हैं. Yeah, this is a good news, doctor, that you are mashallah going slow. You are not going that fast. Yeah. And the way you are speaking is to their understanding, and the PowerPoint presentation and the pictures itself are showing them. They can read, they can understand, but maybe your interaction now, mashallah, it's a bit slow, so it's okay with them. Yeah, very good. So any change, we have to teach our students also. If they are learning mathematics or if they are learning English, they will have some shock, some denial. No, I cannot learn mathematics. I don't understand mathematics for some students. For some students, it's very easy for them to learn mathematics.
then frustration, then depression, then they start doing. Here onwards, the teacher's work start from here onwards. If you are a good teacher, you will definitely work from this position to this position. Teachers' roles, teachers will teach them. Don't worry, I am here to help you. I am your mathematics teacher. Maths is beautiful. Then the teacher walk with the student. The teacher will not be a sage on the stage. The teacher will be a guide on the side of the students. बच्चों का जो डर है, बच्चों का जो खौफ है, वो निकालने के लिए कौन है सबसे ताकतवर? आप ही है, टीचर है. आप बच्चों का मूड, बच्चों की जो कमजोरी को आप ताकत बनाने वाले हैं, तो आपके अंदाज पे है सब. Okay. So what makes very important? I have some slides for you, but I'll pass it to in a quick manner so that you can have a look at them, inshallah. And this is the situation. I don't know in what is the situation in North India, but this is a this is a picture shared by some of the friends. Now, online teaching, some students are sleeping, parents are worried, TV and mobiles are on, students are, enjoying their free time. Here we have three persons, at least three persons. Here, three. One is the parent, mom or bap, and other is the teacher, ustad, the other is the student. इनकी माइंड में, I mean, मन में talking, they are talking. Teacher thinks that the students are learning. Parents are worried. Kids are hakada. And this is the situation in most of the classes, most of the online classes. So this is a difficult situation. How can we make online classroom or offline classroom interesting? The same thing happens, in some of the classes, students are sleeping because they are early from their class, home. They may be sleeping because they didn't take their breakfast. Some of them may not be listening to the teacher because they are physically not fit. Some of them may be very interested to listen to the teacher because they are, alhamdulillah, good. Some of them may be interested to listen to the teacher, but the topic is very difficult for them to understand. And the concept formation is difficult for them, a bit difficult for them. And some of them are very much upset because the mother might have scolded them, reprimanded them, and they may be coming to the class in an upset mood. So the teacher's role is more important in the classroom. The teacher communicates in different ways. I'm going to talk about that in a few minutes. Okay, this is the situation in Europe in the beginning of the COVID. Now the situation is different. And another thing is that teacher on behalf of a teacher, what pleasantly surprised you about online teaching? Do you teach online now? Any of the teachers? Are you engaging them in online teaching? कोई अपने स्कूल पे ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, अकमल साहब या सफीउल्लाह साहब, या स्कूल्स बंद है टोटली? हमारे यहाँ तो नहीं चल रही है सर ऑनलाइन. नहीं चल रहे. And how many kids in your area may have at least mobile phones and tablets so that they can communicate? Are there many or no? कितने बच्चों के पास मोबाइल्स या टैबलेट्स है जो ऑनलाइन इंटरेक्शन? Yeah, and in 20% हो गए सर. 70? हमारे यहाँ नहीं चल रहा सर. 20%. 20% only. That's a very, very pathetic situation. But why should we deprive these 20% at least this online facility? You just start an online teaching, at least with those students who are having it. At least you give them Hadith class and Quran class. Okay, start.
Just start at least in a WhatsApp group or in a platform like this, you know, Inshallah. Zoom. Zoom can give you free access for 40 minutes. Okay, you start at least a Quran class or Hadith class or grammar class or some question answer session. Engage them. या नहीं तो 20, no problem. 20, whether it be 20, no problem. Inshallah, later on they will catch it up. डॉक्टर Assalamu alaikum. Yes. I'm Ubaidullah, and I am taking Quran class Alhamdulillah. from India. Ah. But students are in Dubai. See, online teaching. He is teaching from India. The students are in Dubai. MashaAllah. That means students in Dubai, they have mobile phones and everything. But my question is about the students in our schools. I mean, in our area. या डॉक्टर 1 सेकेंड यहाँ पे डॉक्टर साहब का ये मशवरा है हमारे भाई लोग के जो आपने बताया 20% स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है और टैबलेट्स है, ठीक है, तो आप ये 20% से स्टार्ट करें और हो सकता है कि एक स्टूडेंट जिसके पास टैबलेट मोबाइल हो वो अपने क्लासमेट्स को या फ्रेंड्स को अपने घर पे दावत दे ले. One student who has tablet and mobile can arrange a gathering at his home or somewhere so that this one mobile can be utilized by 10 students. Yeah, That's that's it. it. And this 20% will increase to 30-40% within Inshallah. May Allah remove this, तो pandemic soon. इनका मशवरा ये है कि भाई आप लोग जो 20% स्टूडेंट्स जिसके पास फैसिलिटी है उसको इस्तेमाल करते हुए उसका फायदा उठाते हुए आप लोग जो है ना कम से कम शुरुआत तो ले, यानी 1 साल से स्कूल बंद था, तो 1 साल से स्कूल बंद है मींस स्टूडेंट्स आर टोटली आउट ऑफ education. Yeah. See, look at the picture. When Aliuddin and I speak of this thing, you are where you are shocked. Online teaching. Mushkila. 20%. I don't know. But you say, no, this is not possible. Then you frustrate. Then, inshallah, depression. Then the experiment. 20% mobile. I can start with the 20%. Inshallah. Okay, later on. Inshallah, things will change. You understand what I mean? Aliuddin Sahab, tell them. आप लोग ये 20% से अभी आज के this is a very, very important and we have reached to the objective, doctor. Yeah. Our objective, one of the objective was, now I think we can take this point as our aim, our mission here. For example, Yeah. अपना जो है ना मुस्तकबिल को अभी लेके चलना है, तो अभी ये 20% की बात हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक अच्छा पॉइंट मिल गया आगे बढ़ने का, ताकि ये 20% से आप शुरुआत करें. 1 साल से स्कूल बंद था, 1% बच्चे को भी फायदा नहीं हुआ. Teachers were neither training, the students were not benefiting. So now we have a very good point that at least 20%. Let's start with this 20%. क्या ख्याल है आप लोगों का? इंशाल्लाह शुरू किया जाना चाहिए. Inshallah, that's a good decision. Inshallah. May Allah bless. We are all there. Now, alhamdulillah, with this one session, doctor, we have 20% students now. Alhamdulillah. We'll continue, inshallah. Sure. I would like to visit all the schools. Inshallah, I'll be coming there. I'll be coming, inshallah, with Abdul Latif, Mr. Aliuddin, and Mr. Siraj Bhai, inshallah. I'll be coming and I'll be staying there in your schools for maybe some 10 days or for 15 days. I would be happy to interact with your students. I want to learn Urdu. I want to learn Urdu. I'll teach you English, inshallah. Okay, bhai? Inshallah. Okay, and the next thing is that, this slide is also very important. Mr. Aliuddin, could you please translate? It is important to remember that educational software, like textbooks, is only one tool in the learning process. Only tool, textbook, examinations, or mobile. But neither can be a substitute for a well-trained teacher. Teacher, if they are well-trained, inshallah, he will find a way out to solve the issues. And he will give the best to his students. If there is no mobile, nothing, some teachers go to the homes of the students and give them training, because Allah subhanahu wa ta'ala is testing.
In what way are you helping your students in this pandemic period? I अभी can show you many pictures because, you know, nowadays the people are writing mathematical equations on the street walls because students want to learn. And when they look at the street walls, you know, instead of, you know, political party slogans, parents and social workers are writing down different equations in mathematics, different things in science, so that students learn each day. My question is that, as a teacher, can you at least arrange to, I don't know, the distribution? If it is like in Kerala, one house is only maybe 10 meters or 15 meters away from the other house. But I don't know your situation. But if possible, at least pay a visit to your students, because they are not the sons of other parents, your sons too, because you are the father surrogate. You are the father surrogate. If sisters are listening to me, you are the mother surrogate. So if you do something by visiting them at least once in a month or once in 2 months, that itself is a good education for them. Look, my teacher is visiting me. He is interested in my learning. And he is, mashallah, tabarakallah, doing a great job. At least go and ask them, how are you? Do you write down? Do you read? And, you know, do you have enough food? If they don't have food, you know, arrange some food for them and all these things. And a well-trained teacher is the best educator, the best element in the educational process. And the leadership is also very important. We want every teacher to be a leader, a change maker. Inshallah, I am sure these schools, the students who learn in our schools, will definitely turn into leaders in the future. That is our aim, future leaders. These are the schools of future leaders with practical action plans for the development of the society. They will be in the parliament, Indian parliament. They will be in the different embassies of India in different parts of the world. They will be scientists, they will be doctors, they will be very good pilots. These are our aim. At the same time, they are well-educated Muslims. They are well-educated religious people. This is our aim. That is why we work together, because, you know, the education is the only weapon with which you can fight poverty, unemployment, negativism. This is my request, my dear friends. डॉक्टर 1 सेकेंड डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर साहब का ये मायना बोलना है कि हमने अभी एक ऑब्जेक्टिव, वी स्टार्टेड विथ वन ऑब्जेक्टिव विच वी आर गोइंग टू अकम्प्लिश इट. हम एक शुरुआत लिए 20% बच्चों के साथ, इंशाल्लाह हम ऑनलाइन शुरू करेंगे, ठीक है. और दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो प्रोवर्ब या स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, उसके मुताबिक इन्होंने जो समझाया कि भाई हमको अभी एक अच्छे टीचर को क्या करना है. 1 साल से स्कूल बंद था, तो हमने क्या किया, आपको मालूम है हमने क्या किया, क्या नहीं किया. अब ये ट्रेनिंग से हम लोग ये अभी बात शुरू करेंगे कि इंशाल्लाह 20% स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देंगे. तो अब दूसरी बात यहाँ पे और एक बात हो रही है कि भाई टीचर्स विल गो टू द हाउस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट. क्लोज्ड, there is no schools, so teachers will interact by visiting their students' house, maybe 1, maybe 2, at least once in a week, so that they can motivate them, they can bring them back to the track and educate them in whatever way, whatever. आप उर्दू में बताइए. ये टीचर्स जो है ना, अभी एक हफ्ते में एक बार, एक दिन में एक बार, जैसा भी उनके पास वक्त मिलेगा. स्कूल बंद है, ऑनलाइन टीचिंग का हमने सोचा कि 20% के पास सहूलत है, तो अभी बाकी के जो 80% है उनके पास तो माशाल्लाह सहूलत नहीं है, लेकिन आप खुद उनके घर जा सकते हैं. आपके घर आसपास ही होंगे. आप अपने टीचिंग स्टाफ, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में 10 टीचर्स है, तो 10 टीचर्स को प्रिंसिपल साहब आप डिवाइड कर दीजिए कि भाई ये टीचर जो है ना इतने घर को विजिट करेंगे, इतने स्टूडेंट्स को विजिट करेंगे ये हफ्ते में. ये टीचर इतने घर को विजिट करेंगे, इतने स्टूडेंट्स को विजिट करेंगे. आपके स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स है मसलन आपके स्कूल में, तो आप 10 टीचर्स को 10-10 स्टूडेंट का टारगेट दे दीजिए आप.
कि भाई सफीउल्लाह साहब will visit 10 बच्चे, अब्दुल हादी साहब will visit 10 students, अमीनुद्दीन साहब will visit 20 students. तो ना आपके जो 100 बच्चे जो आपके स्कूल में है जो पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर फिर वो ट्रैक पे आ जाएंगे वापस. वो खुश हो जाएंगे क्योंकि एक साल से वो लोग बुक्स देखे नहीं, बुक्स पढ़े और उनका एक साल जाया हो गया है. तो आपके जो ये विजिट्स है, 1 से 2, 2 से 3, पहली विजिट में हो सकता है वो आपको इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो बताएंगे तबीयत सही नहीं है, मैं बिजी हूँ, दावत में जाना है, घर पे अंकल आए हुए, कुछ भी एक्सक्यूजेस हो सकते हैं. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 1 से 2 विजिट, इसको लाइन में लाने के लिए आपका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर. तो यू एज अ टीचर विल इंटरेक्ट, विल मोटिवेट. आप उनको कुव्वत देंगे, ताकत देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे. फॉर एग्जांपल एक 5-10 रुपए का एक खिलौना ही सही, एक बुक ही सही, यानी इस तरह एक चॉकलेट ही सही, यानी तो इस तरीके से आप इंटरेक्ट करेंगे, विजिट करेंगे रोज, हफ्ते में एक बार. इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर देखिए आपके 100 स्टूडेंट्स वापस आ जाएंगे आपके ट्रैक पे इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. मेरी बात सबको समझ आ रही? मेरी आवाज आपके पास क्लियर जी है? जी आ रही है माशाल्लाह. और ये जो तरीका आपने बताया जो अलीउद्दीन भाई, ये सब बहुत ज्यादा कारगर होगा ये. हाँ, दिस इज द बेस्ट वे ही थिंक्स. दूसरे भाई, सिर्फ मुझे सलफी साहब की आवाज आ रही है, दूसरे भाई लोग भी. अफजल साहब, आपके क्या मशवरा है यहाँ पे? Muhammad Safiullah, what is your opinion? Is it workable? जी बहुत अच्छा मशवरा है और Alhamdulillah. हम कैच कर सकते हैं सारे स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह इस तरह से. अफजल साहब. Inshallah. And Aliuddin Saab, we will prepare some checklists. What the teacher, how the visit, what the time, and how to interact. We can help them, or they can prepare themselves. Yeah, So, they can prepare themselves because they are the take a survey about the educational background of the parents, their siblings, and ask them whether they have books, ask them whether they are good at mathematics, literature, or something like that. And then support them with what you call if there is a dire need of borewell or something like that, they can report to us. If possible, we can manage to find out some borewells or tube wells. And about the health issues, see, in this way there will be sort of what you call a very good community interaction, so that the school can play the role of the community development. The teacher will be agent of the community development instead of the government. They will be really helping the government, and then they can formulate what sort of education, what sort of materials, what sort of health what you call support is needed. In this way, the teachers can be a real nation builder, inshallah, if we do it in a very systematic manner. आप लोग एक प्लान कर लीजिए, आप लोग सब लोग मिलके जो है ना, पहले आपके स्कूल के डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, अभी आप लोग बैठे हुए, सब टीचर्स आर अवेलेबल राइट नाउ इन द स्कूल. सो प्रिंसिपल, डायरेक्टर साहब अपने टीचर्स के साथ यही मीटिंग के बाद, आफ्टर दिस ट्रेनिंग सेशन, आप लोग एक 15-20 मिनट बैठ जाइए अपने टीचर्स के साथ. और इसमें माशाल्लाह तबारकल्लाह अभी जो है ना हम लोग का 1 घंटा जो हम लोग बात किए, इसमें हमारा वक्त जाया नहीं हुआ. यहाँ पे हमारे वक्त में जो है ना हम लोग 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले. 20% हम लोग बोले कि ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन लगेगा, और बाकी के 80% को हम लोग पर्सनली विजिट करेंगे. मे बी वी कैन विजिट 100% स्टूडेंट्स पर्सनली इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन. And one more thing, Mr. Aliuddin sir, after each visit should create a group of students. For example, in a neighborhood, for example, there are 5 students. Ask them to at a single place. First visit must be individual visit. The second visit, inshallah, maybe as the time permits or as their situation allows, let them call the students together. Select a leader for maths, leader for English, leader for science. And these leaders will get empowered. The students will be leaders, inshallah. And they will clean, apart from learning academic subjects, they will clean their surroundings. They will start planting, public trees. And they will, educate what they have learned, because, they are kids. They will start teaching the smaller kids about alphabet and numerics, etc., etc. So we can have a series of developmental programs. Doctor,
upper primary school students may teach the lower primary school students how to write and how to read. And inshallah, that will be a community movement. Yeah, doctor, here one point. Yeah. We have now with this, we came to have an understanding. हम लोग ये बात तय करेंगे इंशाल्लाह कि भी अभी 100% students को हम लोग personal visit पे वो करेंगे. First, personal visit and interaction. That is a ground building. आप लोग सब मेरे मशवरे से राजी है आप लोग सब? ये मुतफिक है हम लोग. बल्कि मैं तो कहता हूँ अलीउद्दीन भाई कि ये ऑनलाइन वाले से फिजिकल विजिट, फिजिकल क्लास लेना सबसे ज्यादा कामयाब होगा. ठीक है, माशाल्लाह. डॉक्टर, they are satisfied with our suggestion. Now, as doctor is telling now, आपका जो मशवरा है, हमारे जो मशवरे पे आप लोग जो चलेंगे, अभी एक ग्रुप्स बना लीजिए, टीचर्स के ग्रुप बना लीजिए, और फिर डॉक्टर का ये मशवरा कि भाई आपके पास 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स को आपने 10 टीचर्स के थ्रू इंटरेक्शन कराया, विजिट कराया, तो 100 स्टूडेंट्स में जो है ना 20-20 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लीजिए और एक स्टूडेंट को उनका लीडर बना दीजिए. आप ग्रुप लीडर बना दीजिए कि ये 20 स्टूडेंट्स को ये टीम लीडर बन जाएगा, ताकि वो बच्चे के अंदर भी जो है ना सलाहियत पैदा होगी, खुशी होगी, मोटिवेशन होगा, वो खुश हो जाएगा कि वो बताएगा हाँ भाई मुझे आपने लीडर का पोजीशन दे दिया, वो खुश होके और इंटरेस्ट जाहिर करेगा. तो आई थिंक दिस पॉइंट हैज बीन the whole session's point, which now they will implement inshallah. This work. And first visit individual and arrange the students to join at a point inshallah in the next week. And along with that, arrange to find some graduates or undergraduate students of that locality as mentors. Okay, Adidin? Mentoring. Or the students selected by the teacher, 5 students or 10 students, there must be, the teacher cannot go every day to them. There can be at least, there will be university students or high school students or pre-degree students and plus 2 students. Let them be the mentors for these kids so that they will develop a sort of what you call, a team spirit, and they will do sports and cultural activities and, social service activities along with learning. You understand? It will be a drastic, what you call, it will bring about a drastic community change. So the teachers, along with the parents and the youth of the community, will work together as a classroom. The youth, 1 or 2 youth must be termed as mentors for the school. They are social servicing. Okay, please tell them this. Yeah. जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक मेंटर को बना लीजिए स्कूल, वहां के एरिया का कोई जो भी ग्रेजुएट बंदा हो, फॉर एग्जांपल, वो बंदे को जो है ना, जैसे हम लोग 100 स्टूडेंट्स में 20-20 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिए, एक टीम लीडर बना लिए, उसी तरीके से उस मोहल्ले के जो है ना 1, 2, 3 जो भी ग्रेजुएट्स है, उनको आप अपने दोस्ताने में अखलाकन जो है ना स्कूल के ताल्लुकात से उनको स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के, सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सोशल सर्विस की बात हो रही है, पेड़ पौधे लगाने की बात हो रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप सीखने की बात हो रही है, यहाँ पे एक दूसरे के सपोर्ट की बात हो रही है. तो बच्चे को जो है ना सिर्फ एजुकेशन से आप लोग ऊपर नहीं लाएंगे, ये सब चीजें मिला के बच्चे को अपलिफ्ट करेंगे आप लोग. And if they are ready, we are ready to provide them with 100 eggs. I would say 100 eggs, okay, chicken eggs, and we will ask them to these small kids, and they will what you call hatch it, and they will bring up chicken. That's another thing. That's a part of their study. Such activities can also be done. And if they are grown up, we can provide them with goats, inshallah. We will ask the good people, goat, or what you call, I don't understand what is the situation there. Or if there are unemployed youth, we are ready to provide them with what you call rickshaw for selling vegetables. While they are doing these things, there must be a culture of working and learning for the grown-up students, university students, because our aim is to bring social development in the area where our school is situated. We want highly educated social servants committed to the social development.
दिस इज अ गुड टॉपिक एंड गुड encouragement डॉक्टर। ये यहाँ पे ये है कि आप सिर्फ तालीम से ही आगे नहीं बढ़ेंगे, तालीम के साथ साथ जो है ना की उम्र में या आगे बढ़ के सपोर्ट भी करेंगे, उन लोग भी सपोर्ट करेंगे और आप लोग अपने आप को सपोर्ट करेंगे काम करते करते। कई लोग के पास पैसे नहीं है एजुकेशन के लिए, अब पेरेंट्स के पास मसलन, तो वो बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ना Adidin Saab, tell them a story of Dr. APJ Abdul Kalam. He was selling newspaper in the morning, but later on he became the president of India. There are plenty of such success stories. Please remind them of that. यस, आप लोग ऐसे कहानियां बताएंगे बच्चों को जो माँ बाप के पास कोई कोई जरिया आमदनी नहीं थी, यानी बच्चों को तालीम देने के लिए, लेकिन बच्चों के खुद के अंदर एक ऐसा जज्बा था और उनके पास बच्चे के जज्बे के साथ साथ कोई ऐसे मेंटर्स चाहिए, टीचर्स है। फॉर एग्जांपल आप है, आप अपने मोहल्ले में देखिए, आपके स्कूल के आसपास एरिया में देखिए, ऐसे कुछ बच्चे मिलेंगे जो यतीम होंगे, जो गरीब होंगे। आप वैसे बच्चों को सपोर्ट करिए जिसके पास टैलेंट बहुत ज्यादा होगा लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होने की वजह से आगे बढ़ नहीं पाएंगे वो लोग। तो आप लोग ऐसे बच्चों को सपोर्ट करिए, उनको आपके सिर्फ दो अच्छे मीठे अल्फाजों से उनकी जिंदगी बन जाएगी। यानी ठीक है सर, मेरी आवाज और मेरे अंदाज आपको सब समझ आ रही है यानी भाई लोग? बिल्कुल सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। Alhamdulillah, please make it, because this is our plan. This is your plan, but we don't know exactly what is the situation there in your area. You adapt these ideas and inshallah you work hard in the initial period. Some hard work is needed, but later on it will become a social movement. I am sure, my dear brothers, this will become a social movement, and that will be a real change maker in your society. And we want every Indians to be highly educated, committed, and socially useful, responsible, and compassionate. I don't know whether they understand the meaning of these words, Brother Aliuddin. Please translate to them. They will understand for sure, mashallah. They are all graduates and all. Alhamdulillah, alhamdulillah. Doctor, if you allow, if you don't mind, ये मशवरा बहुत ही नेक है और ये बहुत सूदमंद होगा और बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट हम भेजेंगे इसको आप लोगों को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करके हम लोग भेजेंगे। और बहुत से गार्जियन ऐसे थे जो पढ़ाई बीच में बंद हो गई एक साल से, तो बोला जो कुछ बच्चे सीखा था वो भी खत्म हो गया। उन लोगों की जो दिलचस्पी मैंने देखा और मैं यहाँ स्कूल में बुला नहीं सका, इसलिए हो सकता है कार्रवाई हो जाए सरकार की तरफ से या इसकी तरफ से। और ये मशवरा जो आया, अब मैं खुद भी एज ए डायरेक्टर मैं टूर करूंगा, विजिट करूंगा और अपने असातिज़ा को मैं भेजूंगा और इसका जो रिजल्ट होगा अनकरीब मैं भेजूंगा इंशाअल्लाह। और अच्छा रिजल्ट along with this, because we have the youth there, because now we are running schools for the children. These youth, because I am focusing on the leadership aspect and the schools. Every hour we have how many schools now? 4 schools or 5 schools? Yeah, 5. 5 schools. There must be a career cell for the 5 schools. MashaAllah, my dear brothers. And the career cell of the school should at least call the youth of that area once in a month and let them be informed about the different opportunities in the government service, in the private sector, the help provided by the government. This is known as career guidance cell. Career guidance cell. So the school will be supported by the undergraduates and graduates, and they will be guided to take which course is good for them. They will be guided to get prepared for the different competitive exams and tests. We are talking all these things from our experience. And if you started in the beginning, it is not possible. But later on, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 4, inshallah, it will be growing up. And this career guidance cell is also must be a part of our school. And one teacher, please take up the leadership. The change will emerge. One panchayat secretary, one district collector, 3-4 school teachers, and 4 or 5 MSW workers. Inshallah, gradually this process will bring about a wonderful change in your area, wherein you will be united for your right, and inshallah things will change.
definitely things will change, my dear friends. This is the art and science of classroom interaction. I'll tell you, during the Second World War, Germany was denied aluminum. One teacher, he was very emotional. He went to the college university classroom and told them, we are direly in need of aluminum. What we have to do? I don't want you to sit in the class. Please go out and find out the ways to find out aluminum. MashaAllah, Tabarakallah, the students got fired and their imagination went wild. And that is how they invented aluminum in a different way. Charles Martin Hall process was developed by that one request from that teacher. In the same way, if you inspire your young generation with such power and passion, definitely things will change within 5 to 10 years in your area. Inshallah. Doctor, thank you very much. Here, if you allow us, can we, it's already 1.5 hours almost. Inshallah. We'll be winding it up because, I'm just focusing on the transformational leadership area. Yes. Since please tell that story to them. They may understand. Yeah, it was a beginning of our training sessions, which we can say, and it was the first interaction. I suggest now, if you allow, with your permission, that please. we will come to a question answer session now, so that the screen comes up. I feel that they are now the blood has, mashallah, flown from top to bottom with your such a hot and powerful speech. So let's have some interaction, and they will give some homework to them, some targets. So please, yeah, they'll prepare some action plans, inshallah, and they can ask some questions. And by the way, please tell them the story that I told you. Can you please repeat the screen, enlarge the screen, so that we'll all see each other, and we'll have the session in a different. Inshallah. And could you please just tell them in Urdu what I told about the aluminium invention of the aluminium, the cheapest mode? Because in the during the Second World War, Germany was denied aluminium because aluminium was a very expensive metal in that time. But a university teacher told us to find out. आप लोग भाई लोग जो डॉक्टर अभी ने समझाया सेकंड वर्ल्ड वॉर के एल्यूमिनियम के बारे में. You understand the story? ये तो समझ में आए. इस पॉइंट से हम लोग पहले से ना वाकिफ हैं. What do they say? आपकी आवाज क्लियर नहीं है. तारीखी पस मंजर. Did you understand what I said? Do you want me to repeat it? I cannot hear you. आप लोगों की आवाज नहीं है कि आपको जवाब देंगे आप. मैं ये कह रहा था लेउद्दीन भाई कि ये जो एल्यूमिनियम जो बैकग्राउंड है, तारीखी पस मंजर है, क्या चीज है, किस चीज का ये किया गया था, इस सिलसिले में जानना चाहते हैं मजीद. अच्छा, doctor, it's better what we'll just give them a slide on this so that they will read and understand better. Now we'll inshallah. Okay, Samir bhai, can you please just tell the essence of the story that I told them in Urdu? Yes, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब अभी ये बता रहे थे कि दूसरी वर्ल्ड वॉर जब हुई थी उस वक्त जर्मनी को एल्यूमिनियम की जरूरत थी और जर्मनी को एल्यूमिनियम ना दिया गया था. सारी दुनिया उसके खिलाफ थी कि जर्मनी को एल्यूमिनियम नहीं ना देना है और उनको एल्यूमिनियम बहुत सख्त जरूरत थी वहां पे. तो वहां पे एक टीचर ने जाके यूनिवर्सिटी में ऐलान कर दिया कि भाई हमें एल्यूमिनियम चाहिए, किसी भी कीमत में चाहिए. और वहां के बच्चे सारे इसके इस सोचने लगे कि क्या करना चाहिए हमें एल्यूमिनियम के लिए. और उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया, एक फॉर्मूला बना लिया था कि एक दूसरे तरीके से हम एल्यूमिनियम बना सके. और कामयाब हो गए. It was from bauxite. It was very cheap. दूसरी एक मेटल बॉक्साइट करके एक मेटल से उन्होंने एल्यूमिनियम बनाना शुरू कर दिया. तो कहने का मकसद ये है कि एक टीचर का एक छोटी सी बात जो बच्चों के अंदर डाल दिया और वो बच्चे उस फिक्र में लगे कि भाई हमें चाहिए किसी भी कीमत में. तो इस किस्म से जो है उन लोगों ने उसके ऊपर लगा. तो इसी तरह से हम भी अपने बच्चों में कुछ एक दिलाना चाहते हैं. एक छोटे से एक चिंगारी लगा देना चाहिए बच्चों के दिल में कि किसी भी कीमत पे वो लोग किसी चीज के ऊपर वो लोग रिसर्च करें और कुछ को ढूंढ के निकालें.
अब आप शम्मा जलाएंगे, शम्मा जलेगी या बुझेगी आपके हाथ में है। माशाअल्लाह। उर्दू जबान में बोल रहा हूँ। Yeah, that's it. That's it. That you said it, Adiuddin. You said it. Thank you, Mr. Samir sir. Now the floor is open for any question and answer session. And Aliuddin Sahab, meanwhile, you just sum up what we have to do. First, Yes. use the 20% visit, then mentoring, then inshallah activities and training, and any support, survey. जी यहाँ पे भाई लोग, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर ये माशाल्लाह ये फीलिंग आ रही है आज की जो पहला सेशन था हमारा, और आप लोग माशाल्लाह 1.5 घंटे से 1.25 घंटे से माशाल्लाह अभी भी हमारे सामने बने हुए हैं। इसका ये मतलब है कि आप लोग बात को समझ रहे हैं और आप लोग और आगे भी इसको लेके जाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, इसका आप नतीजा देखेंगे आप लोगों के चेहरे पे। तो आप लोगों को feedback without asking any feedback, I can feel the positivity, the energy what doctor has given to them and what they have taken. माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने जो आपको एनर्जी दी हुई है, एनर्जी देना डॉक्टर साहब का काम था, लेकिन एनर्जी लेके अब आप स्टूडेंट्स को पहुंचाना आपका काम है। यहाँ पे मैं ये ट्रेनिंग को जो है ना बस एक 2-3 अल्फाजों में समअप करता हूं, मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि पहला इंटरेक्शन था हमारा और पहले इंटरेक्शन में हम लोग ये ट्रेनिंग, वो पावर पॉइंट स्लाइड, ये स्लाइड, मैं मानता हूं इस सब चीजों को। ये सब बोलना अलग चीज है, दिखाना अलग चीज है, समझाना अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में करना आपकी समझ पे है। अब डॉक्टर साहब ने 1.5 घंटा जो बोला, ठीक है, मैं एज ए टीचर कैसे लिया उसको, मैं क्या उनकी 1.5 घंटे की बात को सब 100% समझ गया? नहीं समझ गया मैं 100%। आप भी नहीं समझे होंगे और कोई भी नहीं समझा होगा। अगर इसमें से, जैसे हमने बताया कि इसमें से 2 पॉइंट्स ले ले हम लोग का कंक्लूजन क्या था, ये 2 पॉइंट्स पे 20% ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उसको हम लोग छोड़ दे के अब आपका मशवरा है कि 100% हम लोग पर्सनल विजिट पे स्टूडेंट्स के घर जाएंगे। ये सलफी साहब का मशवरा था, अफजल साहब का मशवरा था। सही है गलत है? ठीक है। अब ये लोग, हम लोग जो है ना, जब स्कूल बंद है मतलब 100% एजुकेशन नहीं था, तो यहाँ पे आज के एक सेशन से हम लोगों को क्या फायदा मिला कि हम लोग इंशाल्लाह 100% सेशन शुरू कर देंगे। स्कूल बंद रहने दो, स्कूल बंद रहा रहने दो, लेकिन 100% स्टूडेंट्स को हम लोग घर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? अब आप कमिटी बनाएंगे, अब आप डायरेक्टर है, स्कूल के प्रिंसिपल है, अब अपने टीचर्स को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स के हिसाब से, फिर वो टीचर्स वो स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगे, वो स्टूडेंट्स में आप टीम लीडर्स बनाएंगे, मोहल्ले के उसमें ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट करेंगे, ताकि फिर आपको सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन के साथ साथ और दूसरे सोशल एक्टिविटीज का भी जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र किया, जिसमें यतीम पुरखा बच्चों का भी जिक्र किया। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए अब आप इसको कैसे अगले सेशन तक लेके जाएंगे, कैसे हमको रिपोर्ट देंगे, ये सब आपके ऊपर है। डॉक्टर को जो बोलना था बता दिया उन्होंने, नाउ ही इज आउट, लेकिन हकीकत में ग्राउंड पे काम करने के लिए आप है, आपके टीचर्स है। हम भी बोले आज बैठे हम लोग, अगले हफ्ते अगले मीटिंग तक हम भी गायब हो जाएंगे, आपसे इंटरेक्शन नहीं होगा हमारा, लेकिन अभी आपका काम शुरू हो गया है। यहाँ पे हम लोग 1 घंटा बोले, सलाम वालेकुम हो गए, लेकिन अभी आपकी जिम्मेदारियां, आपकी जो हौसला अफजाई करने के लिए आपके स्कूल प्रिंसिपल्स है, टीचर्स है, वो स्टूडेंट्स है, और मोटिवेट करिए और उसमें से जो है ना बताइए कि भाई हम लोग आपके 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स में से जो है ना जो टीम लीडर्स आप बनाए, अगर वो टीम लीडर्स अगर अच्छी मोटिवेशन दे के वो करते हैं, बोले कि भाई हम लोग एक स्टूडेंट को जो है ना 1 साल के बुक्स फ्री में दे देंगे, मसलन we will give free books to one student who is motivating other students. Yeah, very important. And we'll conduct some tests based on what they do. Yeah. And we will give scholarship. Yes. अब ये मोटिवेशन जो है ना, ये मोटिवेशन कैसे करेंगे? आप देंगे मोटिवेशन, और ये मोटिवेशन जब देंगे बच्चे खुद इंटरेस्ट पैदा करेंगे। जो भी ये गरीब बच्चे, अगर एक गरीब बच्चा जो है ना अगर इंटरेस्ट पैदा करके दूसरे बच्चों को मोटिवेट करेगा, वो खुद मोटिवेट हो रहा है, दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट कर रहा है। तो हम लोगों का काम क्या है? इंजेक्शन देना है, बूस्टिंग देना है उनको, ताकि यार बच्चे आप बड़े, तो हम लोग उनको एक गिफ्ट्स देंगे उनको। आप लोग सजेस्ट करिए। फॉर एग्जांपल मेरा एक सजेशन था कि भाई जो बच्चा एक कुछ 20 बच्चों को 25 बच्चों को अच्छा लेके ऊपर जाए, क्या हाल है समीर भाई?
हम लोग उनको एक साल के बच्चों की स्कूल की फीस दे देंगे या बुक्स दे देंगे. This way their education will be uplifted and he will continue his education. This is my suggestion. Yes, it came out during the discussion now. Inshallah. Please correct me if I am okay with this. इंशाल्लाह. तो अब आपके पास, अब आप टारगेट प्लान बनाइए. अब आप अगले हफ्ते में या आज से अगले हफ्ते का छोड़िए, अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद अपने टीचर से बैठ के बात करिए नेक्स्ट वीक तक हमको क्या करना है. स्टूडेंट्स You can see the change. स्कूल के स्टूडेंट्स They can see the change. They can see the change, and Yes. I'm sure they can see the change, inshallah. we But can in the feel the initial change period, now. it will be hard, no problem. But inshallah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Things will बिल्कुल. change. there is ease after hardship. तकलीफ के बाद राहत है. ये सूर्य की आयत आप समझ सकते हैं. माशाल्लाह आप लोग हमसे ज्यादा काबिल है. सलफी साहब, इजराइल साहब, अमीनुद्दीन साहब है, काफी लोग Very हैं. happy. And Aliuddin Sahib, I'm very happy. Salafi Sahib is there, Israel Sahib is there, mashallah, youngsters are there, and Afsal Sahib and vibrant youth are there. I am quite confident, I'm quite optimistic that things are going to change. Yes. Bit by bit, inch by inch, meter by meter, kilometer by kilometer, inshallah, I'm sure. एक स्लाइड डॉक्टर साहब ने बताया था आपको, जब ट्रेनिंग सेशन शुरू होगी तो टीचर की क्या ख्याल था. ओ मैं कर नहीं सकता हूँ ये ट्रेनिंग को, आई कैन नॉट डू दिस ट्रेनिंग, आई कैन नॉट, आई एम वीक. 10 आपके पास चीजें थे, ख्यालात थे दिमाग में कि भाई मैं ये कर नहीं सकता हूँ. लेकिन धीरे धीरे पहला कदम बढ़ाइए आप लोग. आज पहला कदम बढ़ा चुके हम सब माशाल्लाह. कितने 4-5 स्कूल के लीडर्स है हमारे पास, प्रिंसिपल्स है, टीचर्स है, और ये 4-5 स्कूल के जो 10-15 टीचर्स है, ये लोग 1000 बच्चों तक पहुंचेंगे. सही है. तो इंशाल्लाह If they have any questions, if they have any concerns, let them speak up. अमीनुद्दीन साहब, आप कुछ बोलिए. अमीनुद्दीन साहब, आपने अभी तक कुछ बोला नहीं. आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए और आप कुछ बोलिए, हम सुनना चाह रहे हैं आपसे. तो मशवरा आप लोगों का है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मशवरा है. और उस पर वो आपने सही बताया कि बोलने का जो था आपने बोल दिया, लेकिन उसका अमल करने की जरूरत है, और उस पर अहमियत के साथ अमल दरामद करना हम लोगों का काम है. और इस पर तो काम हो नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा. अब एक मेरा मशवरा है शेख कि स्कूल बंद है और गांव में बच्चियां एजुकेशन से बहुत दूर है. तो आप जो बता रहे थे ना, तो वो सिस्टम मुझे अच्छा लगा कि गांव ही में एक कोई कमेटी हो, और उस कमेटी में जो एजुकेटेड लोग हैं उसको टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट ही रहे, और उसको तकसीम करके एजुकेशन दिया जाए. तो मेरे ख्याल में वो क्लास भी हो जाएगा, ऑनलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हर गांव में अगर ये सिस्टम हो जाए तो जैसे कि वो ट्यूशन होता है ना, वो ट्यूशन की तरह जो है वो तालीम होती रहेगी. क्योंकि स्कूल तो नहीं चलेगा, लेकिन स्कूल जैसा थोड़ा थोड़ा ग्रुप करके अगर कोई उस गांव ही का जो एजुकेटेड लोग हैं टीचर्स बना करके अगर उन बच्चियों को तालीम दिया जाए तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा. ये भी अच्छा मेरा मशवरा है. आप गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करिए. गवर्नमेंट ने बोला बंद करना है, फॉलो करिए. गवर्नमेंट के रूल को मत तोड़िए, लेकिन एजुकेशन को मत रोकिए. आप जो है ना एजुकेशन, हमें जो अभी मशवरा मिला है, आप लोग जो फॉलो करने वाले, विजिट करिए, शुरू करिए. आज से शुरू करिए, कल नहीं, आज से शुरू कर दीजिए आप. माशाल्लाह. अफजल साहब, आप कुछ बोलिए. आप सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर से ही हमने ये काम शुरू किया है. 10 दिसंबर से 2020 से शुरू किया है. पिछले महीने से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक 60% स्टूडेंट्स को कवर किया है. 40% भी स्टूडेंट हमारे कवर में नहीं है. हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 100% करने की. जो मशवरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर पहले से ही काम कर रहे हैं. दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस काम में बरकत दे और कामयाब करें. आमीन आमीन. मैं समझता हूँ कि हर स्कूल का अलग अलग डिफरेंस वो है, बेटर है. इंशाल्लाह वो अपने अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. इसमें बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह. और आज की मीटिंग में जो बैठ के हमने डिस्कस किया है, जो मीटिंग अटेंड किया है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने में मिली है. और इंशाल्लाह इस पर पूरी कोशिश करने की ज़रूरत है हम टीचरों को और हम प्रिंसिपलों को, ताकि
इससे हमें फायदा मिलता रहे और ऐसी मीटिंग की मज़ीद ज़रूरत भी है इंशाल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह कभी या किसी टाइम इंशाल्लाह हमारी अगली मीटिंग हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हो, लेकिन इस दौरान आप सबसे मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि भाई आप लोग अपनी जो रिपोर्ट है आज से अभी से जो आप लोग प्लान कर रहे हैं अपने टीचर्स के साथ मिलके, फिर स्टूडेंट्स को, फिर जो जो भी आप लोगों की चेन बनती जाएगी उसकी रिपोर्ट अगले सेशन में आप लोग ऐसे ही फेस टू फेस देंगे अगर आप मुनासिब समझे तो। अगर आप लोगों को ओके है तो, यानी ऐसी नहीं कि भाई कोई जबरदस्ती नहीं है, मतलब एक खुशी के साथ आप लोग भी साथ दे, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। हमारा जैसे सपोर्ट था, जैसे बोल दिया हम लोग, उसके बाद एक्शन में लेना आपका काम है। तो सफीर साहब आप कुछ बोलिए भैया। जी जी, मैं 2-3 बातें बोलना चाह रहा हूँ। जी, पहली बात ये थी कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जितनी भी बातें हमारी हुई हैं तो ये रिकॉर्ड है और हम अदर टीचर्स को भी सुना सकेंगे, हमारे पास वीडियोस और रिकॉर्डेड आ जाए तो। एक बात, दूसरी बात ये करना चाह रहा था कि आज जो बातें हुई है इंग्लिश में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, अरबिक में हो, किसी में भी हो, एक खुलासा ग्रुप में आ जाए उसका। और तीसरी बात मेरी ये थी कि एक मिनट सफीला साहब, यहाँ पे एक आपको रोकता हूं मैं। आपने जो खुलासे की बात की है, इसका मतलब ये है कि भाई आप सबको जो डॉक्टर साहब ने बताया कुछ समझ आया है या कुछ समझ नहीं आया? नहीं, ये बात मुझे क्लियर करिए। जी जी, बहुत कुछ समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि सारी बातें अगर रिटर्न में तहरीर में आ जाती हैं तो उसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देखा जा सकता है और मजीद समझा जा सकता है। हाँ, रिटर्न की बात आपकी जो हो रही है, ये डॉक्टर हियर दे नीड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्हिच यू हैव शेयर्ड विद देम सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, रीड वंस ट्वाइस थ्राइस सो दे कैन अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। नो प्रॉब्लम, प्लीज ये हो जाएगा साहब। आगे जी बोलिए। तीसरी बात हमारी ये थी कि अभी आप लोगों की तरफ से जितनी बातें आए उनमें से हमारे यानी स्कूल चलाने वाले, स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और टीचर्स के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं जो पॉइंट दर पॉइंट आपने अलग अलग टाइम पर आपने कहा। तो हम चाहते हैं कि वो सीरियल वाइज एक वो भी आ जाए हमारे पास, हमें करना क्या है और कितने दिनों के अंदर हमें जमा कर देना चाहिए। तो उसमें होगा यह कि हमारा कितना जोश है और हम टाइम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हम पूरा अमल कर रहे हैं कि नहीं, ये हम भी अपने आप को देखेंगे और दूसरे जो स्कूल्स के जिम्मेदारान हैं, प्रिंसिपल और टीचर से हैं, वो कितना आगे हैं, हम कितना पीछे हैं, ये सारा हम अपने आप को नाप सकते हैं। बेशक। बेंचमार्किंग। अब आप लोगों को कितना टाइम चाहिए सर? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अभी आप शुरू करेंगे आपका एक्शन, इस्माइल साहब, अफजल साहब, जो भी है यहाँ पे, अमीनुद्दीन साहब, आप लोग बोलिए कि हम लोग का नेक्स्ट सेशन 1 हफ्ते के बाद होना है या 2 हफ्ते के बाद होना है? आप लोग कब तक रेडी रहेंगे हमारे? And today's session was only a ground preparing session. Inshallah, we will have a focused session for students, teachers, inshallah, in future. We have plenty of resource persons around. Okay, this is only a groundbreaking, ground preparing session. Inshallah, now I got to understand that, Alhamdulillah, you got the message of my talk, and a teacher can make a difference in the lives of the students and in the lives of the community, and teacher can be a social agent. At the same time, school also can do a lot. Alhamdulillah, I'm very happy that you listened to my words and you took the message and the essence of my words. May Allah bless all of us. Thank you very much, and let the discussion continue and put forward your ideas. And as Mr. Aliuddin Sahab said, please make action plans according to your convenience and situation and context, and work it out. Maybe in the beginning it may not be easier for you, but inshallah later on, when we put our heads together, things will change, and we'll have increased energy. Allah will help us, inshallah. इंशाल्लाह। जैसे यहाँ पे हम लोग आज जो ना अपने बीज बो दिए जमीन में, इंशाल्लाह जो भी हमने डिस्कशन किया, हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस किए माशाल्लाह। और मुझे खुशी ये है कि आप सब, शुरुआत में थोड़ा इंटरेक्शन में आगे पीछे हो रहा था, इंग्लिश समझने में, उर्दू में समझाने में, जो भी था, लेकिन मुझे ये खुशी है आपने 100% इसको
समझ चुके हैं ये मीटिंग को, ट्रेनिंग को आज के, और एक्शन प्लान के लिए तैयार हो गए आप लोग। और सब मेरी राय है 2 घंटे से हमारे साथ है, और 2 घंटे से भी जो खुशी है आपके चेहरे पे, और एक्शन के लिए रेडी है। और आप अभी आप 1 हफ्ता लेंगे, 2 हफ्ते लेंगे, ये आप मुझे बताइए। हमारी राय है, टाइम लेंगे आप? हमारी राय है कि पहली बार है इसलिए 2 हफ्ते का टाइम मिले। नेक्स्ट इस संडे हम सपोर्ट करते हैं सकीफुल्लाह साहब के इस मशवरे को। सही है, कम से कम 15 दिन का टाइम होना चाहिए, इंशाल्लाह इसमें हम लोग रिजल्ट। 15 दिन का टाइम तो आप लोग रिपोर्ट या हमारी ट्रेनिंग सेशन के लिए होगा, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। अभी आप शुरुआत कर देंगे, बस जस्ट अगली रिपोर्टिंग के लिए 15 दिन का टाइम है। अर्ली शुरू करते हैं, रिपोर्ट इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद आप लोगों को मिल जाए। मुझे बता रहा हूँ, आप लोग माशाल्लाह शुरू कर दिए, लेकिन हम सबको आज का सेटिस्फैक्शन है बहुत ज्यादा। और मुझे 100% स्टूडेंट्स जो 1 साल से बैठे हुए थे, आज इंशाल्लाह उनको उनके अंदर खुशी होगी, गार्जियन के अंदर भी खुशी होगी इस प्रोग्राम से। मैं बस आप एक बात कहना चाहता हूं कि आपके लेडीज टीचर भी होंगे, तो अगर आप लेडीज टीचर को जमा कर सकते हैं, जितनी भी लेडीज हो सकती हैं, हम लेडीज के लिए सिर्फ लेडी टीचर को अरेंज करेंगे, जो क्लासरूम मैनेजमेंट लेडीज को लेडीज पढ़ाएंगी। इसके लिए हमारे पास एक टीचर हैं जो हमारे काफी फेमस यहाँ पे जिद्दा में टोस्ट मास्टर सारा अंसारी, बहुत ही किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी की भी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफेसर है यहाँ पे, माशाल्लाह। उनसे मैंने बात की है, तो वो क्लासरूम मैनेजमेंट की सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, वो तैयार हैं। अगर आप लेडीज तकरीबन 15-20 लेडीज टीचर्स को अगर आप तैयार करते हैं, तो फिर वो सिर्फ लेडीज को ताकि वो फिर पर्दा और जो भी है उसमें आसानी हो जाएगी, और वो आराम से बगैर तकल्लुफ के वो अपना क्लास कंडक्ट कर सकती हैं लेडीज में। तो ये भी, इसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन आपकी तरफ से इसका इंतजाम करना पड़ेगा। 15-20 लेडी टीचर्स को आप अरेंज कीजिए, और इंशाल्लाह हम अलीउद्दीन भाई के थ्रू इसका भी ऑर्गेनाइजेशन का हम तैयारी कर देंगे आपको। माशाल्लाह, इंशाल्लाह हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। सिराज भाई जज़ाकल्लाह खैर। अमीनुद्दीन साहब, आप लेडीज के कुछ ये थे क्या? वो लेडीज अभी ट्रेनिंग में बैठे हुए सुन रहे हैं हमको आज? जी 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 बिल्कुल सुन रहा हूँ, और कह रहा हूँ कि वो लेडी टीचर के बारे में जो कह रहे हैं ना, तो लेडी टीचर बहुत सारे हैं, और शरीक हो जाएं, और लेडीज ट्रेनर जो है और वो ट्रेनिंग दे, तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा मशवरा है। वो ठीक है इंशाल्लाह, लेकिन आज अवेलेबल है हमारी ये ट्रेनिंग में वो लेडीज जो आपने नाम दिया था? जी जी, रुकैया बेगम जी अवेलेबल है, वो सुन रही है। अच्छा ठीक है, तो एक लेडी टीचर है फिल वक्त, और कोई है? अभी और भी टीचर्स हैं, तो उसको मैं ज्वाइन करा दूंगा अगले इसमें सेशन में इंशाल्लाह। फिल वक्त तो एक ही है, यानी अभी एक ही है। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह सिराज भाई का ये मशवरा है, जो मेहनत है उनके, अल्लाह कामयाब करे इंशाल्लाह। हम सबको फायदा होगा। अब्दुल्ला बुखारी साहब, आप कुछ बोलेंगे आप? And by the way, Brother Aliuddin, inshallah, please continue the discussion, and I'll be leaving in 2-3 minutes. जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। आप लोगों के इस प्रोग्राम में मैं शामिल होकर खुशी का इजहार करता हूं, और आपने इसको के ताल्लुक से यानी कोरोना को लेकर, कोरोना की वजह से यानी ताम को लेकर जो यानी जिस तरह आप लोग यानी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप तमाम को यानी धन्यवाद देता हूँ, और दुआ करता हूँ कि आपके जो इंस्ट्रक्शन है यानी हिदायत, उन तमाम हिदायत पर सब लोग अमल करें। आमीन यार, थैंक यू जी सर। लास्ट में हम यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आप लोग की ये मसई जामिला है जो है, ये जो नेक आप लोग कदम उठाए हैं और कोशिश कर रहे हैं, इन कोशिशों को अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा दे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन अल्लाह। अलीउद्दीन भाई दुआ करा दीजिए। हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, तो दुआ करने दीजिए अपना सल्फी साहब को या अमरुद्दीन साहब को, एक जन दुआ करके खत्म कर देते हैं इसको। जी जी इंशाल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम सल्फी साहब
आपको कहिए कि वो दुआ करें। जी शेख अमीन साहब, जी शेख अमीन साहब, मैं अपने छोटे भाई अकमल सलफी साहब को दुआ के लिए करता हूँ, दुआ करेंगे हम लोग। And inshallah, one more thing is that, there is a sad news for my family. One of my family members, in the sense that, he is the father-in-law of my elder brother. He breathed his last yesterday night due to heart attack. And, he also tested COVID positive. So please include in him, include him in your prayers too. He was such a young-minded old man, and he was full of energy and excitement in everything that we do in our family. And please pray for him too, inshallah. And may Allah bless him, and may Allah bless all of us to live a beautiful life, and of course to be together in Jannatul Firdaus. Inshallah. Allah. आमीन आमीन। शेख अमीन साहब दुआ कर रहे हैं साहब। जी आमिर साहब को कहिए। अच्छा चलिए मैं करता हूँ, चलिए दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया। मफ़हूम को हम समझते हैं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको जितनी सारी नेमतों से नवाजा है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह जिसको भी अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बेहतर वो है हम में से जो कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। यह हमारा फर्ज है। हम जो कुछ जानते हैं बल्लुगु अन्नी वाला आया के तहत हम दूसरों तक, हम बच्चों और बच्चियों तक पहुंचा सके और गार्जियन को खुश कर सके, और ये हमारे लिए दोनों जहान के लिए नजात का जरिया बने। यहाँ भी हमारे लिए बेहतरी हो और क़यामत में भी हमारे लिए नजात का जरिया बने। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर हम टच में रहेंगे। समीर भाई एक दो अल्फाज थैंक्स गिविंग के दे दीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। It's my pleasure and honor to call me for the vote of thanks here. First of all, I'd like to thank Dr. Ismail Maritheri for his so excellent training session. Actually, you should thank him because समीर भाई आपकी उर्दू माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मुझे खुशी हो रही है कि भाई मुझे वोट ऑफ थैंक्स के बुलाया गया है। सबसे पहले मैं थैंक्स अपने डॉक्टर इस्माइल साहब को देना चाह रहा हूं, जो अपने टाइम्स के बिल्कुल बहुत ही बिजी बंदा है। उनके पास एक एक वक्त का उनके पास होना बहुत ही हमारे लिए बहुत ही खुश नसीब हमारे थी कि वो हमारे लिए इतना 1-1.5 घंटा स्पेंड किया। अभी भी वो खुद उनका नेक्स्ट सेशन कहीं पे और भी चल रहा है, तो पहले उनको मैं थैंक्स कहता हूँ। और दूसरा थैंक्स जो है अपने अलीउद्दीन साहब, जो ये आज का सेशन करने में कामयाब रहे हम लोग। साथ ही साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब सिराज साहब और अब्दुल लतीफ साहब, इनके सबके साथ हमारे मतलब जो ताल्लुकात रहे हैं, और उसके इस वजह से जो हम लोग ये सेशन पूरा कर पाए अभी तक। और बाकी सब हर स्कूल के जो प्रिंसिपल और जो टीचर्स वगैरह जो भी आए हैं, उन सबको मेरी तरफ से जो है थैंक्स। और ये चाह रहा हूँ कि मैं कि अगले भी सेशंस जल्दी स्टार्ट करें, और जैसे उन्होंने कहा कि वो जो 2-3 जो उन्होंने कहा थे पॉइंट्स को नोट करते हुए हम आगे बढ़े। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।